Hello everyone. In today's video, we'll learn about the physiographic divisions of India. यानी भारत के भौगोलिक भागों के बारे में, how our land was formed and divided over millions of years. Part 1 Evolution of the Earth. The Earth and its landforms that we see today have evolved over a very long time, approximately 4.6 billion years. Over this long period, our planet has gone through many changes caused by two types of forces, endogenic and exogenic forces. हिंदी एक्सप्लेनेशन एंडोजेनिक फोर्सेस वो होती है जो अंदर से आती है लाइक वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स. एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होती है जो बाहर से इफेक्ट करती है लाइक वाइंड, वाटर और ग्लेशियर्स. Through the movement of these forces and tectonic plates, the geological structure of India came into existence. यानी इंडिया का लैंडफॉर्म इसी प्रोसेस के जरिए बना था. Part 2 What is physiography? Now let's understand what physiography means. Physiography of an area is the outcome of its structure, process, and stage of development. In simple words, हर एरिया का अपना फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे पहाड़, मैदान या प्लेटो. वो किस प्रोसेस से बना और किस स्टेज पार है, ये सब मिलकर उसकी फिजियोग्राफी कहलती है. पार्ट 3 इंडियाज फिजियोग्राफी. इंडिया हैज वास्ट डाइवर्सिटी इन इट्स फिजियोग्राफी. द नॉर्थ हैज रगेड टोपोग्राफी, दैट मीन्स माउंटेन रेंजेस, पीक्स, वैलीज एंड डीप गोर्जेस. While the south has stable lands like plateaus, denuded rocks, and plains. Between these two lies the North Indian Plain, एक flat और fertile area जहां ज्यादा farming होती है. Part 4 Major physiographic divisions of India. Based on these variations, India is divided into 6 main physiographic divisions. 1 key cap the northern and northeastern mountains. 2 the northern plains. 3 the peninsular plateau. 4 the Indian desert. 5 the coastal plains. 6 the islands. These divisions make India's landform one of the most diverse in the world. Quiz time. Try yourself. Physiography of an area is the outcome of 1 structure. 2 process. 3 stage. The correct answer is all of the above.